Anchor Kejriwal Solo, presenting the top stories of the hour. First, the headlines. Manipur Chief Minister Biren Singh on Monday termed the Editors Guild of India's fact-finding team report on Manipur violence as baseless and said that the state government has filed an FIR against the President and 3 members of the Editors Guild of India. An official reporting on Monday said that there was a shooting incident at the Jawaharlal Nehru Medical College of Aligarh Muslim University related to money transaction. "1,000 pigs were killed by a team of veterinarians to prevent the spread of African swine fever infection in Assam's Lakhimpur and also imposed a ban on the entry of poultry and pigs from other states following the outbreak of avian influenza and African swine fever. In a fresh development, ISRO's Vikram lander, which is currently on the moon's south pole, successfully underwent a hop experiment and stayed on command. It fired the engines, elevated itself by about 40 cm as expected. Now for the news in details. Manipur Chief Minister N. Biren Singh on Monday termed the Editors Guild of India's fact-finding team report on Manipur violence as baseless. Addressing a press conference at the CM Durbar Hall, the Chief Minister also said that the state government has filed an FIR against the President and 3 members of the Editors Guild of India, while accusing them of trying to create more clashes in the state, which is rocked by ethnic strifes for almost 4 months now. Biren Singh also questioned how much does the EGI know about the complexity of Northeast, terming the report as shameful. The CM said that it lacked factual information regarding reserved forest and eviction process by the state government. He also called the report an anti-state and anti-establishment. The Editors Guild recently claimed that the media's reports on the ethnic violence in Manipur were one-sided and accused the state leadership of being partisans. Recently, we have seen one report published by the Editor Guilds of India with some points. That is the reason why we are having press conference today. And the points which was raised and comments by the Editor Guilds of India is highly condemnable. And we condemn it in the strongest term because the Honorable Supreme Court has constituted many commissions, including led by the retired Chief Justice and many judges. And above that, the Government of India also constituted a commission of inquiry, headed by the one retired Chief Justice. Investigation is on in different way, in different places. But in the meantime, how the Editor Guilds conclude as a fact-finding team, who constituted them? Who constituted them? They never authorized to have the fact-finding teams and to investigate the Manipur issues. This is a self-style and nothing to do with this present crisis in the state of Manipur. And I also giving warning to the Editor Guilds member. If you want to do something, please come to the spot. Please do visit here, see the ground reality, meet the representatives of the all communities, all victims, then you publish whatever you found. Otherwise, meeting some peoples, some section of the peoples, and coming to the conclusion that this or this, that is highly condemnable. That's why the state government has filed an FIR against the
members of the editor guilds who are trying to create more, classes in the state of Manipur. No, that is the prerogative of the state government. Nobody can ask question to the, because as per rules, as per norm, we are appointing. Just we need to keep our police personnel fit. So he will give more trainings, physical fitness to our police personnel here in the Pangai. Press Club of India has strongly condemned lodging of filing a police case against 3 members of a fact-finding committee of the Editors Guild of India and its president on the media coverage of the ethnic clashes and violence in Manipur. In a condemnation note, the PCI stated that the police have invoked Section 66A of the Information and Technology Act even though the provisions has been struck down by the Supreme Court on multiple occasions. The apex court has directed that nobody should be prosecuted under the provision. It said that the entire issue revolves around the role of the media, and it is evident that the Editors Guild did a commendable job by sending a fact-finding team to check the ground situation and information which are being suppressed. The PCI accused that it is a strong-arm tactic by the state government which amounts to intimidation of the apex media body of the country. At a time when violence marred Manipur needs utmost attention of the government, such a move by the state government would only make the matters worse and would be seen as a deliberate attempt to suppress the truth. It is a case of shooting the messenger rather than taking measures to restore peace in the state, it stated. The PCI further demanded that the FIR against EGI president and the 3 members would be withdrawn immediately. Earlier, while briefing the media persons in Imphal today, Chief Minister N. Biren Singh said the report was misleading and biased. He also warned members of the Editors Guild, if you want to do something, then do visit the spot, see the ground reality, meet the representatives of all communities, and then publish what you found. Otherwise, meeting some sections only and coming to a conclusion is highly commendable. An official reported that 1,000 pigs were culled by a team of veterinarians to prevent the spread of African swine fever infection in Assam's Lakhimpur. The district's animal husbandry and health officer Kuladhar Saika stated that more than 1,000 pigs were culled through electricity shocks. The government of Assam has also imposed a ban on the entry of poultry and pigs from other states following the outbreak of avian influenza and African swine fever. Prevention of steps has been taken for the spread of the fever in Assam and northeastern states, as mentioned by Atul Bora, Assam Animal Husbandry and Veterinary Minister. Notably, the administration culled over 700 pigs amid the African swine flu in Damoh district of Madhya Pradesh in January. An official reporting on Monday said that there was a shooting incident at the Jawaharlal Nehru Medical College of Aligarh Muslim University related to money transaction. Ashok Kumar, the circle officer for Aligarh Civil Line, claims that the shooting even occurred the previous night at around 10 p.m. An altercation over a cash transaction in the canteen incident happened. Local police arrived at the canteen located in front of Ward number 11 of the medical college in the Thana Civil Line area. Hereby, 2 teams have been assembled to apprehend the suspects. None of the canteen owners and defendants in the said dispute are students of AMU. According to the proper sections, a case has been filed against a defendant at the Civil Lines police station, according to Kumar. Further reports awaited. Time for a short break. We'll be back with more news. दुनियाते थाक्या साफा पानी कुंतु खाली 0.3% असे इदु तो खाली खाउले गर्ने एकला नहोय इदु साफा पानी तु
Welcome back. Moving on to the next news. Congress leader in Lok Sabha Adhir Ranjan Chaudhary on Saturday declined to be a part of the high-level committee announced by the centre to examine the possibility of simultaneous election in the country. Speaking to media today, Adhir made some startling revelations that on the night of 21st after 11 p.m. by the Principal Secretary of Prime Minister Modi, Pramod Kumar Mishra, who informed him that the centre had decided to induct him into the One Nation, One Election Committee. PM Union Minister, Parliamentary Minister, and there who could have approached me personally, but they sent a babu, that too through phone after 11 p.m. They have Pegasus. Let them use it and find out what I spoke to him, he said. 31 तारीख रात 11 बजे मेरे फोन पे नहीं, मेरी ऑफिस की हमारे सेक्रेटरी की फोन पे एक कॉल आई प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिश्रा जी का। उनसे मेरा जान पहचान है इसलिए कि मैं कभी कभी पीएम साहब के दफ्तर जाते हैं सीबीआई की डायरेक्टर चयन करने या सीबीसी की चयन करने, तो जान पहचान जरूर है। तो मुझे उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप सर, मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा इतने रात आपने फोन किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का कुछ बात कहना है क्या? कहते कि नहीं, मैं सिर्फ आपसे जानकारी देने के लिए और आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया। मैंने कहा कहिए। ये सरकार एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, ये इस कमेटी में आपको शामिल करना सरकार की मंशा है। ये कमेटी की अगुवाई करेगी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट गोविंद साहब ने, और इसमें आप शामिल होंगे, ये सरकार चाहते हैं। आपका राय क्या है? मैंने कहा सबसे पहली बात, इतने रात आपने फोन किया, तो सबसे बड़ा मैंने आश्चर्य हुई। फिर अच्छा लगे कम से कम रात हुई तो क्या है, बात तो किया आपने मेरे साथ। मैंने कभी कभी पीएम साहब से बात करना चाहते लेकिन बात नहीं होते क्योंकि फोन उठाने की कोई नहीं रहते वहां, तो कम से कम बात तो की है आपने, अच्छा लगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए। कागजात देखने के बाद मैं अपना विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा। क्योंकि मान लीजिए जब हम सीबीआई डायरेक्टर की चयन करने जाते तो सारे कागजात मेरे घर में भेजा करते, सीबीसी की चयन करने जाते सारे कागजात मेरे घर में पहले भेजा करते। ये सारे कागजात देखने के बाद हमें कई नतीजे में पहुंचना पड़ता कि हम वहां जाके क्या कहेंगे। तो बेमतलब बिना किसी कागजात हवा में मैं क्या बात करेंगे, और वो भी एक ऑफिसर के साथ। कोई मंत्री ने कहा मेरे को नहीं, कानून मंत्री थे, पार्लियामेंट मिनिस्टर थे, खुद गृह मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, किसी ने बात नहीं की। एक बाबू को मुझे बात करने के लिए भेजा और ओवर फोन पे, और वो रात 11 बजे की बात। उनके पास तो पेगासस है, पेगासस की इस्तेमाल करके देखो क्या क्या बात मैंने किए हैं। और आपका ईडी सीबीआई का लगा दो, पेगासस को लगा दो कि आपका मिश्रा साहब मुझसे क्या क्या बात कहे और मैं क्या जवाब में कहे थे। उसके बाद अगर हो सके तो जेल में भी डाल दो, मैं और मिश्रा साहब जेल के अंदर हवा खाएंगे, मजा भी लाएंगे, बड़ी मजा होगी। ये झूठ की पुलिंदा मत बनाया करो हमारे देश की सरकार, ये मैं आप लोगों से ये जरूर मांग करूंगा। अगर हिम्मत है तो आमने सामने आपकी तरफ से पेशी किया जाए, जैसे कि मैं खड़ा हूं, जैसे कि मैं खड़ा हूं। झूठ के पुलिंदा अगर सही होते तो ना जाने हिंदुस्तान कितने बदल जाते। हो गया। Moving on to the next news. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said he feels sad that even after being the Prime Minister for 9 years, PM Modi is asking for votes on One Nation, One Election. If One Nation, 1,000 election happen, what do we have to do with it? What will you get from it? Said Kejriwal.
Even after being the Prime Minister for 9 years, if someone asks for votes on one nation, one election, it means that he has not done any work. It should be one nation, one education, one nation, one treatment. Kejriwal further criticized PM Modi, saying in 5 years, the leader comes to you only when elections are held. Elections are held in our country every 6 months. PM Modi is troubled by the fact that he has to go to the public every 6 months. मुझे बेहद दुख होता है 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा 1 इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, 1 नेशन, 1000 इलेक्शन, आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? 1 नेशन 1 इलेक्शन हो चाहे 1 नेशन 20 इलेक्शन हो चाहे 1 नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना? अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 नेशन 1 एजुकेशन, करोड़पति का बेटा, किसान का बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर। अरबपति का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यापारी का बेटा, किराने वाले का बेटा, उसके बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर, तब देश की तरक्की होगी। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज, चाहे गरीब का परिवार हो चाहे अमीर का परिवार हो, सबको एक जैसा शानदार अच्छा इलाज मिलना चाहिए इस देश के अंदर, तब हमारे को फायदा होगा। हमारे को 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फायदा होगा बताओ? गलत तो नहीं कह रहा? मैंने बहुत सोचा ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6ठे महीने चुनाव होते हैं, तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6ठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5000 रुपए का मिलेगा। ये सोचिए 5000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारा। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, 1500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है 1 नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो देके जाएंगे, है कि नहीं है? ये तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे, अपनी 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे ये। As Udayanidhi Stalin, Tamil Nadu's Minister for Youth Welfare and Sports Development, said he stands by his word and is ready to face any legal challenge after his comments on Sanatana Dharma sparked a political row. Delhi's BJP MP Manoj Tiwari said that such remarks could have been dangerous ramifications on the country. Also slamming the INDIA leaders and especially Delhi CM Kejriwal, he questioned why CM Kejriwal has not said anything on the matter for 2 days. Arvind Kejriwal's silence on the matter shows that he is part of the group that wants Sanatan Dharma eradicated, he said. वो एक बहुत संकट में डालने वाला बयान है, लेकिन हमारा इन दोनों नेताओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, आज उनसे एक सवाल है। इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। मैं मनोज तिवारी, दिल्ली का एक सांसद, इस देश का एक कलाकार, मैं प्रार्थना करता हूं सभी सनातन धर्म के लोगों से कि इस पे आप बिल्कुल अपना आपा मत खोना। ये देश में अशांति फैलाने का, नफरत फैलाने का इनका एक प्रयास है।
और हम जितने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आज एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जो लोग इनकी पार्टी के साथ खड़े हैं, गठबंधन बना के खड़े हैं, वो लोग 2 दिन से क्यों चुप हैं? मैं दिल्ली का सांसद हूं, इसलिए मैं डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि 2 दिन से आपका न तो कोई आपत्ति आया है, न खंडन आया है, और न तो आपका गुस्सा दिखा है ऐसे बयान के ऊपर जो सनातन धर्म को समाप्त करने वाला है। इसको क्या समझा जाए अरविंद केजरीवाल जी कि आप सनातन धर्म को समाप्त करने के अभियान के साथ खड़े हैं? 2 दिन हो गए तब मैं ये बात बोल रहा हूं। अरविंद केजरीवाल सनातन धर्म को, और सनातन धर्म को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने धर्म हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, और भी जितने धर्म निकले हैं, सनातन धर्म को समाप्त करने का अभियान इतना खतरनाक बात है कि इस पे अरविंद केजरीवाल की चुप्पी उस गठबंधन में होते हुए यह स्पष्ट दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल जी इसमें शामिल है। फिर भी मैं आज शाम तक आशा करता हूं कि अरविंद केजरीवाल का इस पे बयान आएगा, वो ऐसी पार्टियों से दूरी बनाएंगे और ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे जैसे हम भी कर रहे हैं। That is all we have for the Prime Time Bulletin. Keep watching Hornbill TV. Culture